questions from the members of the media. Right there. आलिया इधर रितेश ईटीवी से आपसे सवाल है कि अभी कुछ दिनों पहले एक मैगजीन पे आपके दोस्त सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आप नज़र आई थी, तो उस पर KRK ने कुछ कमेंट्स किए थे, तो हम आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा रिएक्शन है। कुछ तो बोलिए। मेरा चेहरा बहुत एक्सप्रेसिव है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई नो हमारी फिल्म में गाना है बोलना, बट आई डोंट थिंक राइट नाउ आई वांट टू बोलना। चलिए, अब एक त्यौहार भी आ रहा है होली का, तो होली किस तरह मनाती हैं आलिया? होली मुझे होली से थोड़ा सा डर लगता है। एज अ किड आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट, बट कलर वलर आई फील कि वो स्किन पे एलर्जी होता है, तो आई डोंट सेलिब्रेट होली लाइक दैट। बट यूजली होली के दिन तो छुट्टियाँ होती थी, तो देन दैट यूज टू बी वन मोमेंट वे यू कैन डू नथिंग एंड जस्ट हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। तो वो आई थिंक आई चेरिश द मोस्ट। और ऑब्वियसली बहुत समोसे खाने का मन होता है, जलेबी खाने का मन होता है, सो दैट्स द डे ठंडाई एंड ऑल। But I don't play Holi, but I would want to say to everybody whoever's playing Holi, please be very safe और दूसरों का ख्याल रखना। दूर से बलून फेंकोगे, कभी आँख में लग सकता है, कभी कहाँ लग सकता है, so please be careful. So please identify the media that you're also representing. Sure. Abhishek from Zoom. Alia and Fawad, you both shot for the magazine, so share your experience. How was it shooting together? I think it's a pleasure to work with Alia. In fact, I'm quite sure of that. She's quite full of energy. She's a talented performer. And that's something that is now becoming a bit of a cliche because I think it's associated with her, how great an actor, dancer, and performer and singer she is. So in a magazine shoot, I've never seen her really shoot for a magazine. I've not seen many of her shoots. So looking at that, I think she's just on her way to, in a different, another trophy. But otherwise, I think this Filmfare cover was supposed to be with me and Shahid Kapoor, I believe. But Alia just sort of stepped in at the last minute. Sorry, I had to make my presence felt. It was important for I me. have to also butt in that Alia is probably the fastest heroine I've seen who wraps up 5 changes in 1.5 hours. And it's true. Usually heroes take 1 hour for their hair and makeup, but she is fantastic. She takes 1.5 hours for 5 changes. She's lovely. Notice that he did not compliment me that way. Fawad, you are lovely. Period. No, but I think I took a lot of time. That was one of your complaints. Achha, नहीं, he okay. took time. No, he didn't take any Didn't take time. time at बेचारा फराद, I was feeling very bad for him क्योंकि देख रहे हो फिल्म पे the cover he's wearing one heavy coat and all. It was so hot and Fawad was like just dying. I was feeling so bad for him. I was like, oh God. So in the name of fashion, we guys have to do a lot of things. I think you all should all clap for Fawad. फवाद घर घर में अपने सीरियल्स की वजह से मशहूर हुए हैं भारत में। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। आलिया, फवाद घर घर में मशहूर है अपने सीरियल्स की वजह से, शुरुआत में, बाद में फिल्मों में आए। आपने कभी कोई इनका सीरियल देखा है कभी? और फवाद, क्या आपने कौन सी फिल्में आलिया की देखी हैं जो आपको पसंद है? मैंने I'm aware of his serial Zindagi Gulzare, but I've not managed to see it. But actually काम करने से पहले only I had heard so much about his serial from my mother and her friends, because they're all obsessed with Fawad. कि वो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा actor है, and I've never had requests from my mother's friends to like, oh, when are you shooting with Fawad? Okay, where can we follow him? Okay, can we have his number? तो वो वाला feeling होता है. So I already understood कि okay, he is very very popular. So which is why I was also very intrigued to work with him. कि देखो क्या है, ये लोग सब इतना क्यों बात कर रहे हैं? And now I understand that he is a phenomenal actor, and I had probably the greatest time transporting myself in another world. Thank you. फवाद, आपने कोई फिल्म देखी हो आलिया की जो आपको पसंद आई? Alia's, I have seen Highway. I have seen that movie. Yeah, I've seen Highway. And I think she's given a tremendous performance in that film. That's the last one I can remember. I may have seen something else. I've seen a little bit of Humpty Sharma, but my wife saw
all of it. I did not get to see all of it. She saw most of it. But Highway is a movie that I saw completely from start to end, and I think her work speaks for herself as an actor. I think she's, इन्होंने तो मेरी खामखा में तारीफ कर दी है, but I genuinely mean that about her, that she is a phenomenal actor. I will repeat myself again, and a phenomenal performer. And I think to excel in such a young age, at such a fast pace, and actually be able to stand toe to toe with actors who've been working for years and years and years is quite a feat, is quite an achievement. And she'll come on to you very strong. I mean, first day we shot, she just came on so strong. I was like, wow. I was not expecting this. I thought maybe we should sit down and rehearse this first, but she's so improvisational that she just immediately comes up with stuff. And then I had to, like, you know, sort of bounce off of that, which became a bit of a difficult thing for me because मुझे वैसे भी हिंदी syntax और semantics समझ नहीं आते, तो मैं आगे से line भी कोई नहीं मार सकता था. What rubbish is talking absolute nonsense. Tell them what you don't like about me now. But I don't like Tell them one your bad thing. over competitive nature in games. फवाद, हाय, अली फ्रॉम मूवी टॉकीज. इंडिया में आपके इतने सारे फ़ैन हैं, बहुत लोग आपके सीरियल भी देखते हैं. पाकिस्तान में आपको बहुत सारे फ़ैन हो गए. जब कोई आपकी मूवी इंडिया में रिलीज होता है, क्या सेम टाइम में पाकिस्तान में भी रिलीज होता है? बिकॉज बहुत सारी मूवी पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती है. अच्छा, आप सर आपकी आवाज़ इतनी मफल्ड आ रही थी. सॉरी, एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे आपके फ़ैन हैं, आपके सीरियल भी बहुत पसंद thank करते you. हैं. ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत लोग आपको चाहते होंगे, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि सेम मूवी पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती है. तो डू यू फील ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए? क्या फील करते हो अभी? नो, देखिए, फिल्मों का रिलीज होना ना रिलीज होना I think is an unfortunate thing to happen because you see this is आप रोकने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह जो है the film will make its way into that area. So eventually I think audiences do get to see it. वो जो शायद सिनेमा गोअर्स हैं, जो शायद सिर्फ सिनेमा में जाके देख सकते हैं, probably elderly people, अब तो उनको भी access है. They'll find some way or the other. कोई DVD कहीं से ले आएंगे, कुछ कर लेंगे. So I think what only happens, उसका सिर्फ नुकसान ही होता है दोनों पार्टीज को. I think you know, it economically hurts any person who is involved in the business. So दूसरी चीज़ मुझे से भी लगता है कि I understand and I completely understand why there are censorship laws in every country around the world. But do they really reflect accurately? That will always remain a question. क्योंकि आप और मैं सब के सब जब जाते हैं हम कहते हैं कि यार ये फिल्म क्यों बैन होगी, इतनी ज़्यादा कट क्यों गई. Like अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि नीरजा शायद बैन हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे was not even presented to the censors for approval in the first place. तो ये एक बड़ी controversy चल रही है, but otherwise I think there's some wonderful films that are still playing in Pakistan. So unfortunately it happens on some occasions and I can understand the censor board, but my only point is कि किसी ना किसी तरह हर कोई देख लेगा फिल्म को. Members of the media, last question. Okay, Hi, we'll Alia. take two questions. Yeah. Two questions. हाय आलिया, हाउ आर यू? ओके, मुझे ये पूछना है कि बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े दिग्गज रीजनल मूवीज़ में आ रहे हैं, जैसे कि अक्षय कुमार ने मूवी बनाई है मराठी, अजय देवगन है, संजय लीला भंसाली है, विद्या बालन डेब्यू करने जा रही है अभी नेक्स्ट मंथ मराठी में. कोई ऐसी रीजनल लैंग्वेज या रीजनल मूवी जिसमें आप एक्ट करना चाहेंगी, या आपकी कोई रीजनल फेवरेट लैंग्वेज? Just thinking, my dad keeps pushing me to watch regional films. उन्होंने कहा था कि मुझे बंगाली फिल्म ज़रूर करनी चाहिए. But I think I've always wanted to work with Mani Ratnam. So maybe I'll go down south and I'll do a south film and I'll work with Mani sir too. वे इन महाराष्ट्र कोई मराठी आप कुछ बोल सकते हैं? मराठी, अरे मेरे को एक लाइन दो, मैं मराठी में बोलती हूँ. मला माहित नाही. फवाद को बोल दीजिए. मला मराठी माहित नाही. फवाद को बोल दीजिए, तू खूप छान दिसतोस. तू खूप छान दिसतो. क्या है? मुझे I know. हळू means slow ना. हाँ. One पता last थोड़ा सा. question. Right. आलिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल की भी बातें चल रही हैं, तो आप सीक्वल में काम करना चाहेंगी या इंटरेस्ट रखती हैं सीक्वल में काम करना? हम कपूर एंड सन्स का सीक्वल भी बना सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं. स्टूडेंट ऑफ द ईयर का बन रहा है सीक्वल? हो सकता है, शुड बी मेड अ सीक्वल.